morning, dear students. I hope you are all okay at home. As you know that we have started yesterday the part B of lesson 6, Varanasi the holy city, and the part B name is how to reach, where to stay and what to buy. Beta, we have read yesterday page number 72, and today we will continue the left one part of 72 and 73 page. Let's start it. We will start from here. That is main shopping center. Let's start. The Chowk, Vishwanath Gali, Gyanvyapi Thatheri Bazaar, Lahora Bir, Godolia, the Shashwamedha and Golghar. Varanasi is also famous for its mango fruit, langda, am and delicious sweets. Beta, these are the main shopping centers which we have read now. And Varanasi का जो famous जो mango fruit है वो बहुत famous है. And which type of mango? That is लंगड़ा आम. दशहरी आम आप लोग सुनते होंगे, इनमें से एक वेराइटी कौन सी है? लंगड़ा आम. वो बहुत फेमस है यहाँ का. एंड दैट इज यू कैन शॉप इफ यू गो देयर. We recommend shopping at the government emporia or souvenir shop recognized by the UP tourism. और मोस्टली जब हम वहाँ जाते हैं तो हमें प्रेफर करना चाहिए गवर्नमेंट शॉप्स को, एंड दैट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द UP tourism. I hope you understand what we have read in this part. Let's go to the next page. Start from here. Now is the eating out, मीन्स वहाँ पर हमें क्या क्या है जो हमें यहाँ पर हम खा सकते हैं. मीन्स हमें अवेलेबिलिटी क्या है जो हम ईजिली हमारे ईटिंग के लिए अवेलेबल हो. बेटा, देयर आर वेराइटी ऑफ ईटिंग आउट. मीन्स आप हर तरह का फूड वहाँ ले सकते हैं. इवन आपको चाइनीज़, इंडियन और जो भी कॉन्टिनेंटल या जो यूरोपियन जो देशों में बनता है वो फूड भी मिल जाएगा. और यू कैन गेट द वाराणसी ट्रेडिशनल फूड ऑल्सो. Let's read in this passage what is given here. That is, in Varanasi, dining out, you can be a real pleasure. अगर मान लो आप वाराणसी जा रहे हैं और डाइनिंग आउट मीन्स ड्यूरिंग द ईटिंग ऑफ द टाइम यू कैन बी वेरी हैप्पी. The city's various restaurants serve a variety of cuisine continental. मतलब आपके जो सिटी में, जो वाराणसी सिटी में बेटा वेरियस रेस्टोरेंट्स हैं जो आपको वेराइटी ऑफ द फूड प्रोवाइड करवाते हैं. उन फूड में कौन कौन से हो सकते हैं? चाइनीज़, इंडियन एंड ट्रेडिशनल मुगलई ऑल्सो देयर अवेलेबल इन द रेस्टोरेंट्स. एंड ऑफ कोर्स द बनारसी खाना. अब बनारस में है और वहाँ का ट्रेडिशनल फूड बनारसी खाना नहीं है तो ये तो हो ही नहीं सकता. दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन ऑल दीज रेस्टोरेंट्स. दम आलू, आलू चाट, पानी पूरी. If I ask from you what is that Banarsi khana, then you can give the example. This is dam aloo, aloo chaat और पानी पूरी. I hope this passage also clear. Some of the restaurants one can get reasonably good food for the restaurant at the tourism बंगला. Okay, कुछ रेस्टोरेंट हैं वहाँ पर आप बहुत रीजनेबल रेट्स में और अच्छा फूड आपको अवेलेबल हो सकता है. और उनमें कौन सा रेस्टोरेंट है जो जिसका नाम हमारे को बुक में दिया गया? दैट इज़ रेस्टोरेंट एट द टूरिस्ट बंगला. जो टूरिस्ट के लिए जो हमारी गवर्नमेंट ने बंगलो बनाया है वहाँ पर जो ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट बना हुआ है, दैट यू कैन गेट very good food in on reasonable rates. More are Shiva Cafe, Mona Lisa Cafe, Shahi Restaurant. All these provide you a good food on reasonable rate. I hope this is clear to you. Now is accommodation. मतलब आप वहाँ जा रहे हैं and you have to find out some place to live there for 2-3 days or for night. That you can get very easily. See what is written here in our book. The city offers a wide choice of accommodation. You can get variety of the choice. Means आप अपने according, आपकी capacity के according, means if you are having much money you can get the 5-star facilities. Having the nominal, that you can, that also having a option for your nominal charges more, that if you are having less money that you can also get the stay there very easily. Means easy accommodation is
available in Varanasi city, from 5-star luxury hotel chains to economical clean boarding हाउस. मीन्स आप 5 स्टार से लेकर इकोनॉमिकल लेवल तक के हाउसेज जो बोर्डिंग हाउस है वहाँ तक की आपको फैसिलिटीज़ मिल सकती है. यू कैन टेक अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी. Some of the choices available here. See, some choices are shown. If you are having money, then you can adopt this part. If nominal, then you can adopt this, and according to budget accommodation, that also here. See, in this part all this is shown to us. You can adopt any accommodation according to your capacity, money capacity. Read it what is written here. Some examples are there. Let's start from deluxe hotel. Deluxe hotels, which are example here: Hotel Taj Ganga, Nadesar Palace Ground, Kent, telephone number. Then Hotel Radisson, then Hotel Clark Varanasi, then is Hotel Hinduism International. Standard hotels में कुछ examples है. If I ask from you, then you can give the example. Standard hotels, that Gotham Grand, Hotel Diamond, Hotel Shalimar, Hotel Pallavi International, that also some example there. Now is budget accommodation, that is Shahi River Guest House, then Shankar Guest House, then Om Vishwanath Lodge, then Yogi Lodge, that also. Then other accommodation, railway retiring rooms, Varanasi Kent railway station first floor, booking, matron in charge, that also available for the people who are not having much money. Then paying guest accommodation means the places which are having the paying guest capacity, मतलब आप just pay करते हैं, night stay कर लेते हैं, that is also available here. The city has a number of the paying guest houses, मतलब बहुत सारे paying guest houses बने होते हैं बेटा. You can go there and you can get in the less money accommodation there. Okay, and for the detail, if you want of all these places detail, you can go to local tourism ऑफिस, मतलब आप वहाँ जाकर इनके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. एंड यू कैन गेट ईजिली द अकोमोडेशन विद द हेल्प ऑफ टूरिज्म डिपार्टमेंट. आई होप यू आर गेटिंग व्हाट इज डन बाय अस इन दिस लेसन. इन दिस लेसन बेटा वी जस्ट रेड अबाउट what we can take from there, what we can eat from there, what we can purchase from there, and how you will stay there. I hope all are clear now to you. And today we will I will send you the PDF of the all these question answer. I hope you will do it for today beta. Thanks.